Okay, so just let's just start. So, Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for joining us today in this session. Myself, Amir Ashraf, and I'm currently working as the Chief Coordinator of Research and Innovation Club. Uh, Research and Innovation Club basically एक forum है of National Academy of Young Scientists जो कि डॉक्टर आफ्ताब ने स्टार्ट किया था. सो बेसिकली इसमें जो है हम इस तरह के प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट कर सके, स्पेशली हमारे यंग जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, रिसर्चर्स, उनके दरमियान, ताकि हम पाकिस्तान में ओवरऑल जो है रिसर्च कल्चर जो उसको प्रमोट कर सके. सो RIC टॉक्स इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे इनफॉर्मल टॉक सेशन रखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमें ऑल ओवर पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं एंड दे हैव एन इंटरैक्टिव सेशन विद द गेस्ट स्पीकर. सो आज का जो सेशन है हमारा दैट इज ऑन द साइंस बिहाइंड फास्टिंग, और द स्पीकर who have joined us in today's section is Dr. Aftab Ahmad. लेकिन डॉक्टर आफ्ताब जो है नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट के प्रेसिडेंट हैं. ही हैज बीन रनिंग दिस एकेडमी सिंस लास्ट 12 years. इसके अलावा हम मोस्टली इनको इसी वजह से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है इज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ही इज वर्किंग एट चेठा बायोकेयर एट नर्स, और पाकिस्तान में स्टेम सेल रीजनरेटिंग मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में काफ़ी वर्क कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं. सो आई विल इनवाइट हिम टू स्टार्ट दिस सेशन एंड हैव अ टॉक. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for joining us today for this talk on the science of fasting. Can you hear me well? Yes, we can, but the voice is very low. Okay, I'll try to be a little louder. जी अभी. So let me share the screen with you and then I will start the presentation. I can see many of the people, I know them very well. So thank you for sparing time today to join the session. So let me share the screen and so can you now see the screen? Yes, we can. Okay, great. So today we are going to talk about the science of fasting, and actually this is the topic I wanted to talk last year as well, but we couldn't work on this. So I thought we should proceed for it this year. And this is the area like the Muslims, they are fasting for the last more than 1300 years, but not much work is done on the science of fasting. Um, I Ashraf, maybe there is some background noise, so if you can, okay, it's fine now. So actually, yes. So Muslims, they were like fasting for the last 1300 years, but there is not a lot of work on the science of fasting. So I thought we should work on this to share like what is actually happens to our body while we are fasting. And I will talk briefly about some history and when the fasting started, and also some modern science about the fasting. So Ramadan is here, the fasting month,
to renew our physical, mental, spiritual, body health. So it's not only like good for our spiritual or mental health, it's also very important for our physical health. So today, I will not talk about like how it is important for us for our spiritual health, but I'll mainly focus like because we are the scientists, we mainly talk about our body health. So I will mainly talk about how fasting is helpful for our body. So the fasting is actually a willful refrainment from eating and drinking for a period of time. So, for us Muslims, we start fasting before the sunrise, and we break the fast after the sunset. So this is the time, and I will show a slide in which there is a difference in time of fasting in different countries of the world. And it results in greater concentration on the spiritual side, generate empathy for the hungry, because when we feel ourselves hungry, then we also have the empathy for those people who are deprived of food, and it cleans the body from overindulgence. And in this slide, I will briefly talk about fasting and religion. Fasting is there like in all the religions if we talk about. So can you hear me well now, everybody? Yes, we are hearing. Okay, great. So, so I was talking about the fasting. So this is in all the religions. Like if we talk about Judaism, there is a fasting in Judaism. If we talk about Christianity, there is also fasting in Christianity, and they do fast for like 40 days. And for Muslims, there is a fasting for a whole month of Ramadan. So we do fast. Not only in the religions, but if we talk about, I will briefly talk about some of the earlier history in which there was also practice of fasting. So fasting is a common practice, and in Quran, in Surah Baqarah, Allah says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So, like in Quran, it's a verse in Surah Baqarah. The verse number is 183, in which Allah says that fasting is compulsory for you, as it was uh, before people before you, so that you could be muttaqi. So this is also in Quran part. So this is like it's a common practice. As I'm going to start, like going to share a slide from. Plato, he says that I fast for greater physical and mental efficiency. So Plato, is a great Greek philosopher. So he also used to fast, and it's a common practice in very earlier history, even if we talk about. Even recently, there are some writings from the pyramids. The era of pyramids of the pharaohs in Egypt. That was like before Christ, like around 1700 to 2500 BC. So they are like much before the Christ. And even in those writings, which are revealed from these pyramids, there is also description about fasting. So fasting is a thing which was like very common practice among in the whole history. It's like not only bound to religion. If we talk about that historically, from all the civilization, fasting was a common thing in all those civilizations. These are the hours of fasting across the world, and you can see in the south part is the time is short. If you can like see at the very bottom, in Australia is for 10 hours, in Argentina is 9 hours and 30 minutes. So it's actually varies between around like 10 hours to 20, 21 hours. Like on the top, you can see in Denmark, and it's like 21 hours. In Holland is 18 and a half hours. In Belgium, 18 and a half, France, 16 hours. And in Pakistan, it's around now 16 hours. So there is a difference because of the rotation of the earth, the sun movement. So it varies in different parts of the world. So there are like some participants. I know Dr. Mohsen is there from UK. So they are having, I think, longer time than in Pakistan. So this is the time, like you can see, this is the
time period across the world for fasting. So I got the motivation actually for fasting from Professor Walter Longo. I don't know you know about him or not, but Professor Walter Longo, I met him in Japan. So I was there for a meeting, I think back in 2011. He was also part of that meeting in Okinawa. That's a very famous island in Japan for longevity research. So we had a meeting there. He had a presentation afterwards. We had a meeting, and I was really amazed by his presentation that how fasting can really help you. And after that, I started looking for some more research work in this area, and I was really amazed to like listen and to read and go through a lot of research article that fasting is really really very beneficial for all of us, but we seldom talk about it. So if you really understand the mechanism that how fasting could be very helpful, you really enjoy the fasting. So like we do fast, we love uh, to we love the month of fasting, but now truly after reading a lot of literature, I really wait for this month, and the month should become earlier, so we start fasting. So this is like how you understand the things that, so this is like one thing. There are so many other like things in Islam. We should also talk about the science of those, so we can have a better understanding that how they are helpful for our physical and spiritual health. So these are some of the studies that were done on different organisms, very simple organisms. Like if we talk about bacteria, uh, so the title of this slide is starved organism, they live longer. So if we talk like about the bacteria, the single cellular organisms, which we say prokaryotes. So you can see there is a huge difference, which are like fed normally. They live like for 36 hours. And those who are starved, they can live up to 84 hours. So you can imagine that how big difference is if we go for starving. So starving definitely is helping to live longer. If we talk about baker's yeast, the common yeast that we use like in our food as well. So these are the eukaryotic organisms. The mechanism is almost like if we talk about at genetics level, then the mechanism is very similar in these yeast or in human. But you can see if they are normally fed, these are the number of days. So if they are on the normal fed diet, they can go for like 15 days. And if they can starve, they can go up to more than 40 days. So there is a huge difference of like life of these very simple organisms if they are on normal feed and on starvation. So like we will also discuss briefly that how starvation or restricted food or calorie restriction can really help us. But from the scientific data, there is a ton of data now available from the research articles that this practice is really helpful if we talk about very simple organisms like bacteria, and if we go up till the human. So if we talk about the worms, so we started the journey from prokaryotic single cellular organism to eukaryotic single cellular organism to multicellular organism. So you can see that in the control feed, here it is on the control diet, and if there is a 10% control in diet, then there is also much they live much longer, and if they are starved, then they have a much longer life. So this is a common thing among all the organisms that if we go towards the fasting, then we can extend the life of these organisms. And this is like it's a very important thing to know the concept behind this. Life we in the modern life we are suffering from so many diseases. The cardiovascular diseases, they are the leading cause of death. Around 33% deaths across the world, they are happening through the cardiovascular diseases. And if we talk about like cancer, that is the second leading cause of death. So around like 15 to 17% deaths, they are happening in the world due to the cancer. So the cancer and cardiovascular diseases and the lung diseases, they cause around 50% of the deaths in the world. So we can really prevent these diseases if we go towards the fasting. So I will talk briefly some of the mechanisms. So one of the things that's really helped to the persons
is like there is one study I just got one slide from that circulating stem cells in human. So I'm actually working in the field of stem cells. These are the cells actually which replenish the cells in our body. So for example, there are millions of cells, they are dying in each second, the red blood cells, and they are replenished by the hematopoietic stem cells. So the stem cells, they are actually behind all the cells. So there is a death going on in all the cells in our body, and they are replenished by the stem cells. So you can see that on normal diet, their concentration is less, and on uh, fasting mimicking diet, or you can say on the calorie restriction diet, or during the fasting, their concentration is increased. And there is a whole mechanism. Actually, there are people not only from the life sciences, and there are also people, they have joined from other fields. So I will not talk in that detail. Maybe sometime if we talk about to the life scientist or to the molecular biologist, then we will go in depth at how it helps. But overall, there are a lot of studies now available which indicate that the level of stem cells in our body that is increased during fasting. So this is one of the mechanisms that's helpful. So this slide is very important. I will stay for some time and discuss. Uh, so you can see the beauty of fasting. There are a lot of benefits. So fasting, we start about if we start about controlling diabetes. So what happens in diabetes? The concentration of glucose that increase in our circulation. So this is actually, and why it happens, there is actually the glucose is not taken up by the cells. So this is a common thing in type 2 diabetes, and type 2 diabetes, is a common problem world over. So if we have to control diabetes, we have to control the amount of glucose. And what happens during fasting, we actually reduce the amount of glucose in our blood. When we are going towards fasting, then we actually utilizing the glucose which is available in our circulation, and even in our which is stored in our liver or in the muscle in the form of glycogen, that is being converted into glucose, and we utilize all the sugar. And when we utilize all the sugar, the concentration of sugar is reduced in our blood, and it improves the condition of diabetes. So we actually go for a longer time on glucose, and we utilize all the glucose in our body. So this really helps to improve the condition like diabetes. And then it improves the immune response. There are a lot of studies available, and all these, like you can see the numbers like 3, 4. These are the references, and these are from the scientific studies that it improves the immune response. So if you have to improve the immune response, just like I have showed you a slide about the stem cells, the number of stem cells is increased by the fasting. So the stem cells, they are behind the immune cells. Like if we talk about the B cells, T cells, and the macrophages, and the dendritic cells. So all these cells are coming from the stem cells. So the number of stem cells is increased, and that results in improving immune response. So we are actually, if we have to uh, protect ourselves from infectious diseases, we can also protect us by improving our immune response. Then very important thing is the cellular detoxification. I will talk in one slide about the autophagy. So autophagy is a very beautiful mechanism. And actually what happens, there are a lot of proteins and other important molecules in our body. And with the passage of time, they are not any more useful. Like there are so many glycoproteins, for example. So they stay in our cells, they stay in our circulation, and because they are actually they are from proteins, and they are from glucose, or they are from sugar. So it's a glycoprotein. So it's a combination of uh, like sugar moieties and the amino acids. So when the concentration is increased, they become sticky, and when they become sticky, they are non-functional, and they can result in a lot of cardiovascular diseases. So what happens when we are on fasting? Then the cells start to clean these proteins, like the glycoproteins and other proteins which are not useful in our body. So the cells,
they start eating those proteins. So I will show in one of the slides the whole mechanism that how it happens. But it's a mechanism in which we can actually clean these proteins in our that result in a lot of diseases like in Alzheimer's, Parkinson's, and many of the cardiovascular diseases. So we can really clean up all these proteins, all these other molecules which are not needed by the cells. So they start the autophagy. Even not only if we talk about these proteins and the carbohydrates, even the cells which are weak in our body and they are not necessary in our body, they are also eaten up by the process of autophagy. So they are eaten up and they release the small molecules like glucose and amino acids, and they are taken up by the body. So this is how the cellular detoxification and body detoxification happens during the process of fasting. Then there is a term of loses weight. This not happens in Pakistan. हमारे यहाँ तो ये होता है कि जो रोजे होते हैं और हम रोजा अफ्तार करके इतना खाना शुरू कर देते हैं कि हमारा लाइक किसी का अगर वजन जो है वो 70 केजी है, तो आफ्टर द रमजान वो 72 73 केजी हो चुका होता है. सो दिस इज लाइक हम तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की बजाय सारी रात खाते रहते हैं. बट जो इसका ट्रू लाइक बहुत सारे लोगों में दिस इज लाइक आई वाज जस्ट जोकिंग फॉर some of the people जिसमें ये होता है, but mostly people you have seen that they lose weight after the fasting, and that is also one of the benefits. बहुत सारे like obesity is a common problem world over. बहुत सारी ऐसी nations हैं which have the obesity like 30%, 40%. If we talk about, for example, United States, they have a higher prevalence of obesity. In Mexico, 40% people are obese, and in Pakistan, we are among, I think, the top 10 nations who are very obese. So we are going towards the obesity. So if we have to fight that obesity and we have to lose weight, then we have to go towards the fasting. I have like gone through so many studies that indicates कि अगर आपके ऊपर कोई भी चीज़ें ऐसी हैं, आपने लाइक बहुत सारी चीज़ें ट्राई की आप वेट लूज करने के लिए, दैट डोंट वर्क, एंड फास्टिंग वर्क फॉर इवन दोस पीपल. सो ये एक अलग से डिस्कशन है कि किस तरह से हम अपने मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकते हैं थ्रू फास्टिंग, but it really helps. So I can also share those stories if somebody is interested to go through those. And then improves cardiovascular function. As I mentioned, that the leading cause of death in the world is due to the cardiovascular diseases, and it improves the cardiovascular function. How it improves? Actually, in fasting, we utilize all the glucose in our body. Then there is a startup process of ketosis that also happens in the liver. So what happens? The fat which is stored in our body, that is actually converted into glucose and ketone bodies. And ketone bodies, they are like now a lot of work is going on across the world about ketone bodies, but these are actually the alternative form of energy required in our body. आपको पता है कि ग्लूकोज चाहिए होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, बट लेकिन जब हम फास्ट करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हम सारा ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेते हैं. आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ नीड ऑफ दैट एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो फैट की ब्रेकडाउन से आती है, जिसे हम कीटोसिस कहते हैं, और इससे कीटोन बॉडीज बनती है. कीटोन बॉडीज की ब्यूटी ये है कि जो हार्ट है दैट टेक अप दोज कीटोन बॉडीज, और इनकी ब्यूटी ये है they work as an antioxidant. They have a better capacity to carry the oxygen in the circulation. और ये ऐसी चीजें हैं which really help our cardiovascular health. और ये ना सिर्फ हमारे जो है हार्ट के लिए अच्छी होती हैं, but they are very good for our brain. क्योंकि इसमें हम शायद अगली स्लाइड्स में थोड़ा सा इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए कीटोन बॉडीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हमारे सर्कुलेशन में एक तरफ ग्लूकोज हो और दूसरी तरफ से कीटोन बॉडीज हो, द ब्रेन प्रीफर टू यूटिलाइज द कीटोन बॉडीज ड्यू टू लाइक कि वो इजीली यूटिलाइज हो सकती है, एंटीऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और उसमें दे हैव अ बेटर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो कि हमारे ब्रेन को जाती है, और ब्रेन जो है वो क्लियरली थिंक करना शुरू हो जाता है. सो दे इंड्यूस एंटी एजिंग प्रोसेस एज आई हैव मेंशन इन अर्लियर स्लाइड्स. कि किस तरह से एंटी एजिंग होता है, एक तो मैंने आपको दिखाया कि बैक्टीरिया से शुरू होते हुए यीस्ट और वर्म्स तक, और इसके अलावा माउस की देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज, बहुत ज़्यादा स्टडीज अवेलेबल है माउस पे, जिस दैट रियली इंडिकेट कि हम एजिंग के प्रोसेस को. और अब लाइक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन
कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ये होता है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को 2000 से 2400 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में यू रिड्यूस द कैलोरीज टू ऑलमोस्ट हाफ 1000 से 1200 किलो कैलोरीज एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से देयर आर टन्स ऑफ स्टडीज अवेलेबल, बहुत ज़्यादा स्टडीज अवेलेबल हैं एक्चुअली, टन्स ऑफ स्टडीज, दिस इज अ टर्म मेनली यूज्ड इन अमेरिका, but there are a lot of studies available which indicate that calorie restriction really help you to have a longer life. और बहुत ज़्यादा studies available हैं on animals which indicates कि ये calorie restriction और fasting that help in anti-aging. आप अगर अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फास्टिंग की इस तरह से होता है। when we reduce the calories, actually when we eat a lot of food, what happens, there is a lot of oxidative stress in our body. Oxidation का process होता है, that result in release of free radicals which actually damage our DNA, which are damage our proteins. और जितने हमारे वाइटल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जब वो डैमेज करते हैं तो एजिंग का प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। तो हम जब लो कैलोरी डाइट पे होते हैं या हम जब फास्टिंग करते हैं तो व्हाट हैपेंस कि हमारी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होती है, वी डोंट रिलीज लॉट ऑफ ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स इन आवर सर्कुलेशन इन आवर ऑर्गन्स, और उससे हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। Then we can enhance brain function and improve neurological disorders, as I have talked initially as well, because then what happens, we are not going to utilize the glucose, but we are going to utilize the ketone bodies, क्योंकि वो ketosis का process शुरू हो जाता है, और that is very helpful for our brain. तो ब्रेन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आफ्टर लाइक आपने भी देखा होगा फास्टिंग के दौरान कि वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। Then we improve the lifespan that we have already discussed कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि हम बहुत सारे जो ऑक्सीडेंट्स हैं उनको रिलीज नहीं करवाते, और इस तरह से हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है। Then we can reduce the stress, that is also one of the thing that happens in our daily life कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो we prepare our body to work against the stress. बहुत सारी जो stresses होती हैं, especially hunger is one of the stress, तो उसको हम जब फेस करते हैं तो इससे ओवरऑल हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। In addition, inflammation is like is a very Dr. Mosen is there. He works a lot on inflammation and inflammatory cells. But according to studies, actually, when we do fasting, then we result in lower inflammation. Actually, aging is actually directly linked with the inflammation. Wherever there is a more inflammation inside our body, that result in damage to the cells, and that result in the aging process. So when we go towards fasting, we lower this inflammation. And how this happens, actually, there is a less expression of stress hormone, there is a less expression of inflammatory cytokines in our blood. So you can also find a lot of studies which are available that after fasting, we lower the concentration of inflammatory cytokines in our circulation, and that results in lower inflammation in our body. We can also go for better sleep because when we actually go for fasting, then we also improve our sleep. So there is also data available on that how we can improve the sleep after fasting. And then we normalize the blood pressure, as I mentioned, that when we go towards fasting, what happens? हम बॉडी को क्लियर, ऑटोफेगी का प्रोसेस शुरू होता है, हम जितनी टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में वो रिलीज वो उनको क्लियर अप कर देते हैं, and that result in normalization of blood pressure. तो ये बहुत ज़्यादा इसमें भी स्टडीज अवेलेबल है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, खास तौर पे पाकिस्तान में, as I mentioned like few days back, 46% adult population is suffering from hypertension. So हमारे यहाँ it's a big problem, and if we have to normalize the things, we have to go towards fasting. So fasting can really be very helpful for those people who are suffering from blood pressure, and then it reduces the risk of cancer and improve cancer therapy. I have done some work on this, so I will share those slides as well, and I will talk in detail during that. In addition, a very important thing is the bio rhythm. You know, हमारी अपनी बॉडी में एक जो है वो साइकिल होता है, सर्केडियन साइकिल जिसे कहते हैं, जो कि हमारे बायो रिदम को मेंटेन करता है। हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारी बॉडी में, जो कि दिन और
रात को डिफ्रेंशिएट करता है कि कब आपको सोना चाहिए, कब आपको जागना चाहिए। तो हमारी जो लाइफ है सॉरी, जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, that actually disturb that circadian cycle in our body। और ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम जो है वो सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं, और इस तरह से हम उस क्लॉक को जो कि डिस्टर्ब हो चुका है, जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी का, उसको वंस अगेन एक प्रैक्टिस करते हैं कि वो वापस अपनी रूटीन पे आ सके और हमारी सेहत के लिए जो कि अच्छा है। मैंने काफ़ी सारी डिस्कशन की अबाउट लाइक कीटोन बॉडीज। सो व्हाट हैपन्स, इस स्लाइड में आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि अगर हम ग्लूकोज पे रहते हैं, ये एक स्लाइड में हम देखते हैं कि लाइक दिस इज 12 PM एंड देन 12 AM, ये हमारी जो 24 आवर्स के लिए, जब हम उसमें खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल अप होता है, हम वॉक करते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है, फिर हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज अप होती है, और इस तरह से जो नॉर्मली हम 12 घंटे में 3 या 4 मील लेते हैं, उससे ग्लूकोज अप होती है और उससे वो लो। तो उसमें कोई हम नॉर्मल जो हमारी डाइट होती है, कीटोन्स का मैंने आपको बताया कि दे आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेशन का भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब हम इन पे जाते हैं तो हमारी सर्कुलेशन जो है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है, जो इम्प्रूव करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ को, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इसमें कीटोन्स का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। यू कैन सी कि हम ये खा रहे हैं, ग्लूकोज अप होती है, कीटोन्स उसी तरह से रहते हैं। लेकिन जब हम उसी तरह से अगर हम फास्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर हम फास्ट कर रहे हैं फॉर लाइक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसके बाद अगर ग्लूकोज लेते हैं तो कीटोन जो है वो फिर नीचे चली जाती हैं। लेकिन जैसे हम फास्ट करते हैं, आफ्टर जैसे ही हम ग्लूकोज को हमारी बॉडी से ख़त्म करना शुरू करते हैं, डिपेंड्स कि आपने कितनी जो है वो डाइट ली हुई है, कितना आपके पास ग्लाइकोजन स्टोर है, या कितनी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आफ्टर consumption of glucose, the level of ketone they start increasing and it goes up and up। तो इस तरह से कीटोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट्स रियली हेल्प आवर बॉडी। तो उसमें आप ये देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम एक खास विंडो में इसे यूज करते हैं फ्रॉम लाइक 12 AM, these are the studies being done by different researchers, this is recently published like in 2017, but you can see अगर एक और विंडो में भी हम देखते हैं, so the glucose when it goes down, the ketones they go up, and then we start eating, then the level goes down। इसमें दो तीन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे स्टडीज बताता हूँ कि हम कितनी देर के लिए फास्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल किसी का अगर वेट 70 kg है, उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा तकरीबन 15 किलोग्राम फैट्स होती है which we can utilize, and that fat can goes for months। नॉर्मली जो स्टडीज हैं that indicate कि जो ह्यूमन है, पहले ख्याल किया जाता था कि हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो शायद 2-3 दिन तक ही जिंदा रह सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पानी पीते जाते हैं और उसके साथ आप खाना कुछ भी नहीं इवन खाते, तो यू कैन गो फॉर अप टू इवन 40 days। 40 days तक आप कुछ खाए बगैर we have enough storage of fats which can be burned into ketones, and that can actually provide the supply to our whole body। So at least we can go up to like 40 days, even 40 to 60 days we can go without food। हम सिर्फ अगर पानी लेते रहें तो हम फूड कुछ भी ना खाएं तो हम 40 दिन तक जो है वो आसानी से गुजार सकते हैं। आई नो लाइक एक आपने भी प्रैक्टिस देखी होगी कि कुछ लोग जो चिल्ला काटते थे in earlier days, I don't know, it's not a common practice now, but some spiritual people used to like go for chilla is like 40 days। वो अपने साथ सिर्फ पानी लेके जाते थे और कुछ जौ के दाने लेके जाते थे, एंड देन दे गो फॉर लाइक 40 days on just on water and few grain of uh, wheat or barley। So this is how it could be like। ये ऐसा नहीं है कि जी आप बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे तो आपको कुछ होना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी जो बॉडी में फैट है, और मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ यहाँ पे पेंगुइन्स की। सबसे आई थिंक जो अभी एनिमल्स पे स्टडीज की गई उसमें पेंगुइन्स ऐसे हैं और मेल पेंगुइन्स ऐसे हैं विच गो फॉर वेरी लॉन्ग एक्चुअली फास्ट। जब उनमें ब्रीडिंग का सीजन होता है, मेल सिट ऑन द एग फॉर लाइक 4 months, और वो 4 months के लिए
बिल्कुल जो है वो कोई डाइट जो है वो नहीं लेता, वो सिर्फ उसी जो उनका एग्स होते हैं उसकी वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, और उसी टाइम में they utilize the fat, उससे पहले वो फीड करते हैं, फैट को स्टोरेज करते हैं, and for like 110 days they stay there without eating anything. So you can imagine that that they can go for a very long time of fasting, और उस तरह से उनके वजन में like 15 से 20 किलो कमी होती है, and then they go for feeding once again, and then वो अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, so it's like that कि अगर आप इवन फीड नहीं भी करते, this is also a practice in 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 animals, like I have given you the example of penguins. इसके अलावा आपने देखा होगा some birds, आप जो zoologist हैं, they can fly like for 2000 kilometers in one go, and how they can achieve that is actually the stored fat that they burn in the form of energy and they give to the body, and that help them to like travel non-stop for thousands of kilometers. This is how it happens. In this slide, there is a functional effect of major cellular and molecular response of various organ system to fasting. So if we talk about, मैं इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको already discuss कर चुका हूँ, तो हम एक दो चीजों पे ही अगर हम focus करते हैं, for example, if we start from brain, then it improve cognition. मैंने बताया कि आप clarity in thinking जो है वो आना शुरू हो जाती है. Then there is a neurotrophic factor production, brain drive neurotrophy, and you have like maybe listened about those. These are the brain factors, brain drive growth factors. So these neurotrophic, what they do, ये एक तो ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं, और दूसरा जो साइनैप्स होते हैं उनकी जो नंबर है उसको ये इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. And there is a lot of that studies now available which indicate, as you can see, there is also reference of Anton et al. This is also recently published study in 2018, and this image is from that study, and there is a reference for all these studies, like all these factors that I have mentioned. आपके ब्रेन में neurotrophic factors जो है, there is a huge production of those, and that result in improved plasticity in the brain, protection of the brain cell, increase in the number of brain stem cells, and there is also resistance to injury and disease. So these are, and one of the very important like factor that happens in our whole body. देखिए हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. Normally what happens aging के दौरान जब होता है, तो the number of these mitochondria that reduce in our body. हमारे cells में mitochondria की जो concentration होती है, like cells में it varies, like कुछ cells में कुछ जो है कुछ mitochondria से लेके thousands of mitochondria हो सकते हैं, but the number is reduced. One of the like major studies that happen, according to those studies, mitochondrial biogenesis happen during fasting. जब हम फास्टिंग करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आना शुरू हो जाती है. So this is one of the like factor, very key factor that happen during the fasting. Sorry. So if we talk about the cardiovascular system, then it results in reduced blood pressure, as I have already mentioned, reduced resting heart rate. That's also very important for our health. हमारा heart rate जो है वो बढ़ा रहता है, और इसको जो resting stage में heart rate है उसको हम कम कर सकते हैं. And then it also results in stress resistance. हमारे blood में बहुत ज़्यादा changes आती हैं, like elevated ketone levels. मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा बात की है. Reduce in glucose, उससे इंसुलिन का लेवल भी कम होता है और लेप्टिन का लेवल भी, और इन्हीं की वजह से एक्चुअली इंसुलिन और ये जो डायबिटीज होती है, इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते टाइप 2 डायबिटीज में. ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाती, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसकी वजह से इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एंड दैट रिजल्ट इन नंबर ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी, from brain disorders to affect on our kidneys, affect on our liver, affect on our nervous system, and so on. So ये इंसुलिन का लेवल भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लूकोज का लेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं. Then there is elevated adiponectin level that's very helpful for our body to reduce inflammatory cytokines, as we have already discussed,
एंड देन रिड्यूस मार्कर ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये मैंने आपको बताया कि जब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में ओवरऑल स्ट्रेस आता है, उसको हम जो है वो कम कर सकते हैं। लेट मी चेक द टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लूँ। वी शुड हैव सम टाइम फॉर लाइक डिस्कशन एट द एंड, or you can also like if you have any question in mind up till now, you can stop me anytime and we can also have some discussion on that. But if we talk about whole body, आपकी skin से लेके आपके brain तक, the process of fasting that is actually helpful for our whole organ system, जिसमें बहुत ज़्यादा studies available. ये एक और studies है by Michael et al. In 2019 and it indicates that daily fasting improve health and survival in pale mice. आप देख सकते हैं कि ये जी eating time है जिसमें वो मुसलसल खा रहा है माउस, तो then there is no delayed disease onset, उसमें उसी तरह से disease जो है वो आती है and lifetime extension भी नहीं हो रहा अगर हम नॉर्मल डाइट पे जिस तरह से हम डेली खा रहे होते हैं, स्नैकिंग कर रहे होते हैं। हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। अगर हम माउस को 13 आवर्स के लिए फास्टिंग करवाते हैं और उस तरह से उसकी फीडिंग करते हैं तो व्हाट हैपेंस विद दिस, देयर इज अ डिलेड डिजीज ऑनसेट, जो मैंने बहुत शुरू में बात की कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं विच आर रिजल्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं फास्टिंग के थ्रू। और हम बिलीव मी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ये होल मंथ ऑफ रमजान कि वो हम बहुत सारी डिजीज जो हम में आ रही होती हैं उनको हम डिले कर सकते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डिलेड डिजीज ऑनसेट भी है एंड लाइफ टाइम एक्सटेंशन भी है। लेकिन हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, उसको हम 21 आवर्स के लिए हम भूखा रखते हैं एंड वी हैव ए फीडिंग टाइम ऑफ जस्ट 3 आवर्स, then you can see lot of outcome. There is a plus plus, here is a minus, here is a plus, and here is a plus plus. So there is a much better performance. There is a much late in disease onset, and there is a much difference in life extension as I have like given you in earlier slides, जिसमें मैंने बताया कि this is the study on mouse, लेकिन बाकी एनिमल्स में मैंने बैक्टीरिया, यीस्ट और वर्म्स में आपको दिखाया कि that really result in lifetime extension. उस तरह से हम experiments human में नहीं कर सकते हैं। like अगर आपने human पे आप average life expand जो है humans का that's around 80 years, आपने life expectancy को अगर study करना है control group में और वो लोग जो fasting करते हैं, then you have to go for like 3 generation of scientists to complete that study. So उसको हम करने के लिए we go for the animals, like इनको हम easily study कर सकते हैं, but there are also studies on human now available. और मैंने शुरू में आपको बताया था कि किस तरह से I will talk briefly about the legends and history and then talk about the modern science के modern science जो है वो कब से fasting पे जो है वो studies publish होना शुरू हुई and what the latest studies tell us about. This here in this slide, this is a very recent study by Brett et al. In 2021 and that indicate कि हम जब starvation करते हैं या हम fasting करते हैं, it has similar effect कि हम anti-cancer drugs जो use करते हैं, rapamycin for example. तो ये जब हम starvation करते हैं, इसमें अगर हम biologist से बात करेंगे तो we'll discuss in detail. But there is a mTOR-C1 complex in our body. उसको हम inhibit कर सकते हैं and that ultimately results कि हमारी body में जितने extra molecules होंगे, जो कि मैंने बहुत पहले आपको बताया है कि हमारी बहुत ज़्यादा ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसी होती हैं which are sticky in nature, वो स्टिक हो जाती हैं सेल्स में और सेल की ग्रोथ को इवन स्टॉप कर देती हैं, सेल को वीक कर देती हैं. सो वी कैन make the autophagosomes in our cells by starvation, और फिर उसको हम they actually join with the lysosomes and they make autolysosomes and they result in degradation. और जब ये degradation होती है, they break down into glucose and other carbohydrates as well as into amino acids, और amino acids जो हैं they are being taken up by the cells. तो इस तरह से हम बॉडी को ऑटोफेजी की तरफ लेके जाते हैं और इस तरह से वी कैन जो हमें सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, कंपोनेंट चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, ग्लूकोज चाहिए होता है, उसको हम दोबारा से बना सकते हैं और इस तरह से सेल्स को हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और वीक सेल्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
और इससे बॉडी में जो है वो बेहतरी आना शुरू। So I was like very much impressed by the work that was done by Professor Walter. और उसको फिर पाकिस्तान में आके हमने कुछ when I was working in School of Biological Sciences, so then we started to replicating some of the work. उन्होंने जिस तरह से जो है स्टडी किया हुआ था, that's very actually interesting study. उनके रिजल्ट्स ये थे कि अगर हम जो माउस है उसको हम स्टार्व करवाते हैं, तो स्टार्व करवाने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है और रेजिस्टेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने माउस के एक्सपेरिमेंट किए प्रोफेसर वॉल्टर ने, उसके जो स्टडीज थी दैट्स वर रियली इंटरेस्टिंग। उसमें ये हुआ कि उन्होंने नॉर्मल फैट माउस लिए और एक तरफ वो था जिसमें उन्होंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की। अब जब जिनको उन्होंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की, जब उन्होंने एंटी कैंसरस ड्रग्स दी और उसकी हायर डोज दी, जो नॉर्मल फैट पे थे, जब उनमें वो ड्रग्स आई दैट इंड्यूस लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दोस, और मोर देन 50% जो माउस थे उनकी डेथ हो गई। उसके मुकाबले में जिनको स्टारवेशन करवाया गया, जब उनको वो ड्रग्स दी गई तो उन पे उसका कोई कुछ असर ना हुआ और उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, नो डेथ रिपोर्टेड, दे वर एक्टिव। और इसके बजाय में जो नॉर्मल डाइट पे थे, जब उनको स्ट्रेस दिया गया इस तरह का, उनकी डेथ भी हो गई, और जो जिनकी डेथ नहीं हुई दे वर वेरी मच स्लगिश, उनकी दे वर अबाउट टू डाई। इसी तरह की हमने स्टडीज की कि स्टारवेशन इंड्यूस स्ट्रेस रेजिस्टेंस इन माइस, और इसी तरह से हमने माउस जो है उनको एक एंटी कैंसरस ड्रग दी, दैट वाज अ डिफरेंट ड्रग दैट वाज यूज्ड बाय प्रोफेसर वॉल्टर। हमने टॉपसाइड दिया और उनको हमने स्टार्व करवाया 24 to 36 आवर्स के लिए, और इसके बाद हमने सिमिलर रिजल्ट्स हमने देखे कि इसमें जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस रेजिस्टेंस आ जाती है। वो किस तरह से आती है? देयर इज अनदर स्टडी दैट वाज आल्सो पब्लिश्ड बाय अस back in 2014, that is starvation based differential chemotherapy, a novel approach for cancer treatment. अब कैंसर में क्या होता है, जो हमारे बॉडी में कैंसरस सेल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी मच हंग्री फॉर ग्लूकोज, दे नीड द ग्लूकोज। कि आपने ये लाइक हमारे यहाँ जो भी आप रिसर्चर्स दे आर वर्किंग कैंसर, दे हैव लाइक दे नो अबाउट दिस कि they have a very strong appetite for glucose, वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। And when we go towards like calorie restriction, तो हम उनको ग्लूकोज, तो एक तो डायरेक्ट मैकेनिज्म है कि हम उन्हें ग्लूकोज नहीं देते, जिसकी वजह से वो सेल डाई होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अब हम कैंसर थेरेपी की अगर बात करते हैं, तो जब हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में व्हाट हैपन, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे गो इनटू ए प्रोटेक्टिव मोड, वो एक प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं, दे डोंट टेक अप एनी फॉरेन थिंग्स। वो एक, जैसे आप कह लीजिए देयर इज अ होल मैकेनिज्म, मे बी आई विल एक्सप्लेन सम टाइम इन डिटेल। आज तो हमारे पास लाइक आई विल टॉक लाइक for the next maybe 5 minutes, and then we'll have the questions. So what happens, so normal cells होते हैं, they go protective mode, जो cancer cells होते हैं they don't activate that protection mechanism। ये इसकी slide है जिसमें you can see कि हमारे जो normal cells होते हैं they go into a protective mode, जो cancer cells होते हैं they don't activate that protective mode। तो जैसे ही हम कीमोथेरेपी की कोई ड्रग देते हैं, तो कीमोथेरेपी की ड्रग की वजह से that is not actually taken up by the normal cells, that is actually taken up by the cancer cells। तो इस तरह से हम जो कैंसर सेल्स हैं उसको बहुत जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। हमने ये कंसेप्ट बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल में उनके साथ जाके डिस्कस किया। नॉर्मली डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि बंदा कैंसर से पहले ही सफ़र कर रहा है, और उसकी अगर हमने डाइट भी ख़त्म कर दी तो वो तो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आगे जाके आपको कुछ स्टडीज अब जो रिसेंटली ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा, बट इट लाइक इट डू वर्क। जिस तरह से मैंने आपको माउस स्टडीज जो है हमने खुद भी की और पब्लिश भी किया, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं, कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। तो हम सिलेक्टिवली कैंसर सेल्स को थ्रू फास्टिंग, तो फास्टिंग में मैं इन पे आपको कुछ स्टडीज भी बताऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में 1930 से ऑनवर्ड, यानी 20th सेंचुरी के शुरू से इस पे काम होना शुरू किया। इनिशियली स्टार्टेड इन रशिया, जिसमें रशिया में डाटा दे पब्लिश दैट कि फास्टिंग अगर आप करते हैं तो दैट इज़ लाइक सेफ फॉर यू। इससे पहले तो ख्याल किया जाता था कि फास्टिंग करेंगे तो बंदा तो
बस उसके बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली स्टडी जो हुई वो रशिया से थी, एंड दैट इंडिकेटेड कि फास्टिंग इज़ सेफ फॉर ह्यूमन, कि ह्यूमन जो है दे कैन गो टुवर्ड फास्टिंग, और इसी के बेसिस पे दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एनिमल्स। सो देयर इज़ अ वन सेंटर, ये आप कोरिया चिनिस, if I can like pronounce it correctly. This is one of the center जहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर है इन रशिया, और पूरी दुनिया से लोग रशिया में जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट, एंड देयर ट्रीटमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन फास्टिंग, कि वो वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको फास्टिंग करवाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डाटा दे हैव पब्लिश सो फार, there is like 2/3 of the patient they improve through the fasting therapy, जिनका like कोई इलाज नहीं होता, खास तौर पे the person who are suffering from autoimmune disease. You know, around 4% of the population in the world, they are suffering from autoimmune diseases. It's a big number. Or they are suffering from like asthma, from like osteoarthritis and many other complications. They just go there for fasting, and they do fast, and they take up all the like blood parameters, and there is a lot of improvement. Like I have seen the data from these studies, and there is a much improvement in those people. So it started like back in time in 1930s, and then they published. And still there is an active center there, and thousands of people, they are visiting this center each year to do the fasting therapy there, and that is being done on the very scientific way. So this is in Russia. Another very important center in Germany is Oberlingen in Germany, and this is the link of their center. And this center also, like for the very long time, they also doing the fasting therapy, और उसको भी पूरा एक scientifically जो है वो किया जाता है. Patient, those European patients, they don't want to move to Russia, they can go to Germany, और इस Germany center में they have now their own like diet pattern, कि किस तरह से उनको feed करना है, कितनी calories उन्हें, but that is actually based on fasting. Normally they go for fasting for like 21 days, and in 21 days they reduce the calorie uh, amount of calories, but they like can go on water, वो पानी पीते रहते हैं. But overall these studies indicated कि वहाँ पे भी patient जो है वो बहुत ज़्यादा improve हुए. अब इन दो center की basis पे ये जो, if I can pronounce it correctly, this is Charity Hospital in Berlin. ये यूरोप का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, और यू कैन चेक फॉर दिस हॉस्पिटल नाउ दे हैव a dedicated ward for fasting, और हर साल around 500 patients को they treat through the fasting. So this is one of the biggest public sector hospital in Berlin in Germany. And I asked one of my colleagues who is working in this hospital and just waiting. I have a call with him today at 4. So we'll further discuss that how this center is actually helping the patient through the fasting. So इस center में they treat the patient through the fasting. So यूरोप में आप ये common practice होने जा रही है कि they should go. और मैं एक और बड़ी interesting चीज आपको share करूँ कि जितने researchers ने I have gone through like their work, those who are working in United States or those who are working in Germany, जिन्होंने animal studies की या जिन्होंने human पे कुछ काम किया, they also started fasting. उन्होंने भी फास्टिंग करना शुरू कर दी, और मतलब यू कैन, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, चेक कीजिएगा, बायोस्फीयर 2, जिसमें एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया साइंटिस्ट का, और वो बायोस्फीयर 2 में चले गए, एंड दे हैव ए वेरी वेरी लो कैलोरी डाइट, और उसका क्या, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, आपको जो है वो जरूर उसके गो थ्रू होना चाहिए. तो initially the concept was कि जी कैंसर पेशेंट को हमें फास्टिंग नहीं करवाना चाहिए, but recently Norris Comprehensive Cancer Center and Hospital in California, US, इसकी बैकग्राउंड में आप इसकी इमेज देख सकते हैं. This is the hospital. Now they have a dedicated ward for fasting and cancer, and they have recently run a trial on number of patients in which they have gone towards fasting, and I have like gone through the interviews of those patients, and they indicated कि अगर वो उन्होंने फास्टिंग जिस तरह से की है, आफ्टर दैट जो severe effects थे कीमोथेरेपी के, जिस तरह से होते हैं फटीग और कीमोब्रेन और बहुत ज़्यादा जो complications आती हैं, that was greatly reduced in those patients as compared to which were on normal diet. तो उन्होंने उसका जो comparison किया है. So this is going to be started, this is going to gain momentum, और इस तरह से स्पेन में भी I have like recently gone through some of the centers, the cancer center, they are also going to start
these kind of studies. So this is going to be a common practice. So overall, we can say that based on existing evidence, we conclude that there is a great potential for lifestyle that incorporate fasting during adult life to promote optimal health and reduce the risk of many chronic and life-threatening diseases. So we can prevent a lot of chronic and life-threatening diseases through the fasting process, and it's very helpful for all of us. So happy blessed month of Ramadan. रोजे रखिए, उससे आपकी definitely you will have a better spiritual health, better empathy for those people who are like hungry, and also you can greatly improve your physical health that you can like see afterwards. That's in we will have a lot of good energy in our body. So these are the references from which the data was taken, as I mentioned on our slides. And I must acknowledge my colleagues, Mudassar Khan, who actually helped to get some data for this presentation. Maha Yusuf, she's at the Islamic International University, and she also helped us to prepare the presentation, and Dr. Kubra Aftab for helping us to prepare this presentation. With this, I'm really very much thankful to all of you for spending time for this. I think this is a very first kind of like, there is a discussion on TV channels, the health of fasting, the health impact, and how fasting can help to improve your health, and sometimes discussion related to diabetes. But I think this is very first kind of presentation on actually the science of fasting in Pakistan, and we will definitely go for further like a presentation maybe in coming days. Thank you very much. Thank you, Dr. Aftab. It was very nice to hear all the scientific relation of fasting with our DNAs and genetic makeup. So, is it studied that there are relationships between some specific genetic makeups or disorders which can be inherited or environmental? Yes, actually मैंने जो इसमें स्लाइड में भी बताया है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं हुआ है. Although like it started in back in 1930 from Russia to some centers in Germany back in like 1950s, 1960s. But later on, now the things are gaining momentum. It is very helpful for certain diseases, especially as we have talked about, like autoimmune diseases. It's very helpful for those, and other diseases like the chronic pain and the brain disorders. But in certain cases, we shouldn't go for fasting. Like if you are suffering from liver diseases, for example, you know, liver is the center which have to process the glycogen to glucose or ketosis that happen in the liver. Or somebody is suffering from the kidney diseases. So, you know, in kidney disease, there is also need to balance the salts in our blood. So if there is like change, that could be the life-threatening thing. So in certain cases, as doctor also advise कि अगर आप बीमार हैं तो आपको जो है वो fasting नहीं करना चाहिए. जो आपने सवाल पूछा specifically about the DNA, and this could be really very, very interesting. Like now we talk about the diet, DNA and the diet, and we also going towards the, like you are also working in area, for example, precision medicine or tailor medicine. So in that case, we definitely have to go through the DNA. So right now, I haven't like gone through the studies that are being done in this area, that how the genetics is related to the fasting and how beneficial it could be. But this could be a very important area to investigate further. It was very nice. It's first time. Actually, once before, there was some presentation on some social media from Dr. Bragg of US. He was comparing the West and the East, and especially the Gulf countries, that there is very low rate of cancer incidence. Yes. And one of the reasons were, he also mentioned that it's because of perhaps the fasting. They usually do more fasting than other part of the world. So thank you so very much. Nice, very nice. Thank you.